डियर टीचर्स, आज हमने बच्चों को स्टीम एजुकेशन के 3+ मैथ्स के रीडर से नंबर 5 की अच्छे से पहचान करवा ली। क्लासरूम में भी ज़रूरी है कि आप बच्चों को इस नंबर की अच्छे से रिकग्निशन करवाइए। फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, QR कोड को स्कैन करके, वीडियोस के थ्रू बच्चों को अच्छे से इस नंबर की पहचान करवाएं। प्री राइटिंग स्किल्स के लिए बच्चों को एयर में लिखना सिखाइए, सैंड पे लिखना सिखाइए। उसके बाद रीडर ओपन करके स्टीम एजुकेशन की टोटल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रूर करवाइए। जब बच्चों को अच्छे से इस नंबर की पहचान हो जाए फिर बच्चे रीडर पे लिखना सीखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। In the Little Explorers section, tell the learners that we have 5 fingers on each hand and 5 toes on each foot. In the Little Innovators, let the learners explore more about number 5 by scanning the QR code. In the Little Builders, provide the learners with blocks and encourage them to build a tower that is 5 blocks high. In the Little Designers, encourage the learners to complete the sketches of the 5 flowers on the next page using finger impressions. In the Little Thinkers, ask the learners to count the number of fingers on one hand.